Do you use ChatGPT or Perplexity or Grok or any other AI chatbot which is available in the internet? Are you familiar with all these chatbots for educational purposes, the use cases of them for educational purposes? So if you are a student, obviously you must have seen by now, if you are accustomed to the internet and a smartphone, that the use cases of these chatbots are immense. Now if I tell you that the government has decided to introduce the AI technology things or courses about AI since class 3rd, and it will eventually go up to class 12th, and the graduation and post graduation curricula in India gradually as per the National Education Policy 2020. Do you think it is something which is alarming, or do you think it is something which is inevitable? So that's what I'm going to discuss in today's class. That if we are going to persist with the introduction of artificial intelligence, will it destroy the real learning in education sector? वेलकम टू श्रीराम IAS. माय नेम इज सौरभ और आज का जो टॉपिक है इट इज वेरी वेरी significant not only for UPSC but also for the general audience. So AI, everybody these days is talking about artificial intelligence, the possibility that it has, the potential that it embodies, the dangers it may carry. So AI की अगर हम बात करते हैं तो सरकार, the government of India is also very concerned about it, and they are thinking of doing this, that class 3rd onwards into school curricula the AI will be an integral part, because they want to create a future workforce, individuals who will graduate in after 18 years or 20 years. So they should be prepared for the future. और टेक्नोलॉजीज को अगर हम लोअर लेवल पे ही इंटीग्रेट करना शुरू कर दें तो जो स्टूडेंट है उसकी अडॉप्टेबिलिटी भी उस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़िया हो जाती है. बट ओबियसली द इंटायर debate which looks like academic has resulted into serious concerns, so much and so that the idea, the word brain rot has become very very popular. Brain rot was a word which was chosen by the Oxford University Press as the word of the year for 2024. It simply means intellectual flattening, the diminishing of the intellectual capability, cognitive skills because of rudimentary use of technology. जैसे पैसिव स्क्रोलिंग लोग करते हैं, इसको डूम स्क्रोलिंग भी कहा जाता है. तो brain rot is becoming a very popular word which has real life consequences. Our memories are simply diminishing. Our cognitive faculties, our imagination, our linguistic skills are on the decline because of this rudimentary use of टेक्नोलॉजी. और AI का जो यूज केस है, अगर हम एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करें, इट हैज वेरी वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटीज एंड पोटेंशियल. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सेट द स्टेज. हम इसके बारे में थोड़ा सा एक बेसिक डेफिनेशन समझते हैं. AI क्या होता है? इट इज सिंपली द एबिलिटी ऑफ द मशीन्स टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस. मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस. इट मिमिक एंड मिरर ह्यूमन इंटेलिजेंस by learning from data, recognizing patterns and making decisions. So there are variety of types here in artificial intelligence. The thing that we are focused on as of now is large language models, LLMs like ChatGPT, Grok or Perplexity. हम अभी artificial general intelligence के बारे में बात नहीं कर रहे. AGI is a completely different ball game. We are talking about the LLM, द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो आज काफी पॉपुलर हो गए हैं. एवरीबडी ऑलमोस्ट, इफ यू सी दीज डेज, आर यूजिंग देम. तो इसीलिए इट इज अंडर आर इन्वेस्टिगेशन, आर डिस्कशन. तो AI, once we establish what it does, basically we have to understand it is in historical context. The image behind me you must be aware of. The Google CEO Sundar Pichai is saying AI is one of the most important things humanity is working on. It is more profound than electricity or fire.
So it is more profound than even comparison if you do with the electricity. Electricity has transformed the world that we live in. Fire is the bedrock of human evolution, our brains. Yes, because of the fire we can cook our food, and the digestive system, the digestive tract of the body, it has less energy to focus on that food to digest, क्योंकि जो अनकुक्ड फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में डाइजेस्टिव सिस्टम की ज्यादा एनर्जी लगती है, कुक्ड फूड में नहीं लगती. So that energy, excess energy, was then diverted into the development of the brain. Just look at historical comparison what they are making. It will be bigger than these two, and these two themselves are defining tech of the human civilization. So इस context में हमें इसको देखना समझना है. Now what is happening? Everybody, and if you see in universities, in schools, everybody advocating the use case of AI in education. एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सारे चाहते हैं कि एआई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पे हो, क्योंकि बाकी जो सेक्टर से जैसे हेल्थ हो गया वहाँ पे एआई का यूज केस काफ़ी बताया जा रहा है, वो लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं. चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एवरीवेयर एआई इज बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू. जितनी बड़ी कंपनीज हैं सिलिकॉन वैली की इस समय, वो सारी, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, everybody is investing money mindlessly at this point of time into artificial intelligence. एक रेस तरह की चल रही है, एजुकेशन सेक्टर में भी है, और बहुत तरीके के बेनिफिट गिनाए जाते हैं कि भाई पर्सनलाइज लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, इनोवेशन इन एजुकेशन रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया है, adaptive learning systems, enhanced instructional support, data driven insights. It can do very mundane work for the teachers and professors and the people who are into deep research. उनके लिए बहुत सारे administrative जो टास्क, repetitive टास्क हैं, उनको AI हैंडल कर सकता है. So they now they can focus on higher productivity margin topics and issues. ये कर सकता है AI. But since in schools, early schools, middle school, late schools, if you see, even in university programs, the graduate programs, AI का use case बहुत बढ़ गया. People are starting using AI to write answers, to write thesis, to go for their homeworks. बच्चे होमवर्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं चैट जीपीटी और बाकी इस तरह के टूल्स को. तो इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? एलएलएम का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का. मैंने पहले भी कहा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर नॉट एजीआई, दे मिमिक एंड मिरर, बट दे यूटिलाइज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, एंड दैट इज कि वो लैंग्वेज विच हैज ऑलवेज बीन ए मीडियम ऑफ थॉट फॉर ह्यूमंस. लैंग्वेज हैव ऑलवेज बीन ए मीडियम ऑफ थॉट फॉर ह्यूमंस. जो थिंकिंग प्रोसेस है और जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हुआ है, इफ यू सी, जो थिंकिंग है ब्रेन की और लैंग्वेज का डेवलपमेंट, इट वेंट हैंड इन हैंड. इफ यू सी द ह्यूमन हिस्ट्री, द इवोल्यूशन ऑफ होमोसेपियंस, तो जो थिंकिंग है और लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, ये साथ साथ हुआ है. वी आर द ओनली स्पेसीज विच हैव दैट प्रोफाउंड मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं. भाषा का कोर माध्यम क्या है? संवाद उसका कोर माध्यम है, कोर ऑब्जेक्टिव है, साध्य है. वी यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस अवर थॉट, टू कम्युनिकेट, एंड मेनी अ टाइम्स वी कंफ्यूज लैंग्वेज फॉर थिंकिंग. और इसको और मैं रिफाइन करूं तो बोलूंगा स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस. So many a times this is our habit that we misconstrue the language as the smartness or intelligence part. तो large language model LLM इस चीज का misuse करते हैं. They have been fed the entire internet. They have massive processing capabilities. उनको पूरा इंटरनेट फीड कराया गया है और पूरी मैसिव उनके पास प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है. So, और probabilistic answers ChatGPT gives you. Yes, on the basis of your history, they will give you a probabilistic answers. Statistics का वहाँ काफी बढ़िया इस्तेमाल करते हुए वो एक आंसर प्रोवाइड करते हैं, और उनके पास पूरा इंटरनेट का डेटा है और इतनी मैसिव प्रोसेसिंग पावर है. So you confuse that response what ChatGPT give you as intelligence or smartness, as if we are talking to a real person.
And that is why these days people are using ChatGPT as a counselor or as a friend. Many incidences are there where people are sharing their deep details about them with the ChatGPT. So much and so they're going to the extent of sharing the suicidal thoughts also. इतना मैसिव यहाँ पे चेंज आ रहा है बिकॉज पीपल कंफ्यूज द लैंग्वेज एज थिंकिंग और स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस बिकॉज बोथ हैव डेवलप्ड और को एग्जिस्टेड फॉर मिलेनिया इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ होमोसेपियंस द इवोल्यूशन ऑफ होमोसेपियंस तो इसीलिए हम इसको कंफ्यूज कर ले जाते हैं और जिसका इस्तेमाल एलएलएम ये जो कंपनीज हैं ओपन एआई बाकी हैं इसका मिसयूज करते हैं एंड दैट इज व्हाई दिस इज सच अ इंपॉर्टेंट इशू अगर हम बात करें लैंग्वेज एज ए फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन थॉट की तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल लैंग्वेज इज नॉट जस्ट ए स्किल बट ए मीडियम ऑफ थॉट this is idea to develop cognitive maturity humans obviously gone through the language through immersion in reading writing listening तो हम जब पढ़ते हैं जब बुक्स पढ़ते हैं when you write also when you listen to lectures big lectures long duration lectures also तो उससे क्या होता है हमारी cognitive faculties develop होती हैं cognitive faculties develop होती हैं because language is linked with what human brain's evolution we have always been evolved like that now if you go for small tasks जैसे summary बनाने के लिए AI को दे दिया thesis के points बनाने के लिए दे दिया to generate points also to think on behalf of you जो creativity वाला part है जो innovation वाला part है उसको आपने AI को दे दिया तो your own cognitive faculties will decline इसको ही brain rot कहते हैं इसको ही dead internet theory कहते हैं intellectual flattening of the people and that is something which is very very concerning and education the role of education the educational role of reading and writing if you see that is very very important for centuries societies have developed moral reasoning through this great text has been written moral reasoning what is right what is wrong what is good what is bad ये हमने डेवलप किया है थ्रू रीडिंग राइटिंग स्कॉलर्स पोएट्स शायर्स तो गालिब was not a product of AI. No AI can match his ingenuity, his intelligence, his way with words. हाँ मिमिक कर सकते हैं मिरर कर सकते हैं लेकिन वो जो क्रिएटिविटी वाला पार्ट है वो हमेशा AI के पास जो ओरिजिनलिटी है वो मिसिंग होगा नाउ इफ व्हेन AI रिप्लेसेस रीडिंग समराइजिंग एक्सेट्रा तो स्टूडेंट्स मिस द चांस टू डेवलप these cognitive faculties so AI shortcuts are that is why in that sense are harmful और सब कोग्निटिव सोसाइटी को एआई जन्म देगा इट विल ओरिजिनेट द सब कोग्निटिव सोसाइटी एआई विल प्रोड्यूस लिंग्विस्टिकली एंड कोग्निटिवली स्टंटेड इंडिविजुअल्स जिनको प्रॉब्लम्स होंगी आने वाले समय में टू रिटेन थिंग्स इन देयर हेड मेमोरी की प्रॉब्लम्स होंगी जो कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो न्यूज आइटम्स हैं उनको समझने में प्रॉब्लम होगी बिकॉज दे आर सो डिपेंडेंट दे हैड आउटसोर्स्ड देयर थिंकिंग टू एआई आर्गुमेंट्स को क्रिटिकली इवेल्युएट करने में प्रॉब्लम्स होंगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेदर इट इज राइट और रॉन्ग गुड और बैड प्रेफरेबल और नॉट एंड टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग ये सारे चैलेंजेस उनको होंगे जो इंडिविजुअल्स हु विल ग्रो with AI and who will be dependent on AI for thinking purposes. Example के तौर पे देख लो, you have seen it. Since you started using calculators extensively, your cognitive faculties, which relates to multiplication, division, other thing, it declines naturally. It's like a muscle. If you are not using the muscle, obviously उसकी जो strength है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी. तो यहाँ पे यही बात है कुल मिला के. And that is why it is a serious problem. Subcognitive society. And there are great professors, linguistics में जो डोमेन में जो काम करने वाले लोग हैं, scholars हैं, जैसे नॉम चॉम्स्की of America, he talks about कि how true intelligence is not only about stating facts or making predictions, is also about understanding why things happens. He gives an example कि न्यूटन के सिर पे सेब गिरा पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो he thought कि why this has happened instead of making general fact based assessments. The imagination is key. It is about thinking beyond obvious facts. लेकिन chat GPT is simply what
It has fed the entire internet. So it is only giving you back what it already exists in the internet. तो ये है मोरल थिंकिंग का जो लिंक है ट्रू इंटेलिजेंस के साथ, वो स्टैब्लिश्ड है. व्हाट इज धर्म, व्हाट इज अधर्म, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये इंटेलिजेंस के साथ इनबिल्ट होता है ह्यूमंस की. लेकिन एआई के साथ ऐसा नहीं होगा. इट कैन नॉट थिंक, इट कैन नॉट फील, इट कैन ओनली मिरर एंड मिमिक, जिसकी वजह से ये फ्लैटनिंग होगी इंटेलेक्चुअल जो हमें दिखाई देगी. और ये जो लोग कहते हैं कि इट इज इनएविटेबल, होना ही है, एआई का यूज केस है, इट विल बी देयर, यू हैव टू डील विद दिस. तो दे शुड आल्सो रिमेंबर हिस्टोरिकली ऑल टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज इन अ वे दे हैव बीन प्रूव्ड इफेक्टिव. यस, दे हैव इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स. यस, बट अभी जो ये शिफ्ट हो रहा है, इट रिस्क डिसमेंटलिंग द लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ थॉट इटसेल्फ. तो रूट पे स्ट्राइक करेगा हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के ऊपर. तो दिस lecture primarily which I have just delivered is about critically thinking about the AI use cases in education. और बहुत बड़े बड़े वादे पहले भी किए हैं सिलिकॉन वैलीज के टेक एंटरप्रेन्योर्स ने और फाउंडर्स ने. बड़े बड़े वादे होते रहे हैं. फेसबुक जब आया था तो बहुत बड़ा वादा था कि इट विल हेल्प इन फॉर्मिंग फ्रेंडशिप्स. इज इट ट्रू? नो. इट हेल्प्स यू in building status, posting pictures so that others can also see your lifestyle and your experiences and all. But it did not results into more social cohesion, more, if you see, intellectual development. It all of them has resulted into less social cohesion. ट्विटर हो गया, जिसे आजकल एक्स कहते हैं, इतनी बड़ी सोशल मीडिया के यूज केसेस थे, बताए जाते थे कि कम्युनिकेशन बढ़ेगा और बहुत सी चीजें होंगी. अब देखिए क्या हो रहा है वहां. डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज फैलाया जा रहा है. जो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, रिलीजियस टेंशन से उसके कारण बढ़ रही हैं. प्रोपोगंडा के तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज उनका इस्तेमाल कर रही हैं. तो बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं पहले भी, बट उससे शेयर होल्डर्स का फायदा जरूर हुआ है, लेकिन जनरल सोसाइटी का फायदा नहीं हुआ. सोशल कोहेजन गिरा है, लिटरेसी में कमी आई है, और कोग्निटिव डिक्लाइन वहां पे है. तो दैट इज व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ एआई इन एजुकेशन. हायर एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए मोरली, इंटेलेक्चुअली, कोग्निटिवली साउंड इंडिविजुअल्स का कल्टीवेशन. इफ यू थिंक एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ जॉब के साथ उसको लिंक करना है, फ्यूचर का वर्कफोर्स क्रिएट करना है, देन इट विल ऑब्वियसली विल बी, in a way it will stand opposed to what we celebrate as the democratic way of life. This is the single biggest challenge which is going to come with artificial intelligence, particularly in education sector. So use, but use carefully. Always polish your own cognitive faculties so that आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि जो लोग सोच सकेंगे, जिनके पास इंडिविजुअल क्रिएटिविटी होगी, इनोवेटिव पोटेंशियल होगा, they will obviously have far more chances of success, because AI will also results into what? Uniformity at the level of thinking. That is why intellectual flattening होगी, और डाइवर्सिटी का यहाँ पे जो थॉट बेस्ड डाइवर्सिटी है उसका लॉस होगा, and eventually cognitive decline होगा. I hope all of you understood the topic in detail, जो core है इस लेक्चर का, because that is very very crucial for our UPSC exam as well and for the general audience. Now you can connect with me through my Telegram channel also. This is the link for the Telegram channel. Stay tuned for tomorrow's or day after tomorrow or every single day that we will meet here at 8 p.m. in the evening for a interesting discussion on a burning current affairs issue. Thank you for giving me your time.